lesson. Okay. Now see, we were doing the coniferous forest. Okay, these forests are also known as taiga. Taiga का मतलब होता है रशियन में untouched. These forests are also known as taiga. And the word taiga means untouched. Okay. Yeah. Meaning untouched in Russian. Okay. So what we see is this coniferous forest. Okay. They basically, they have what kind of trees? They have the conical, the trees. Okay, like sure, pine, cedar. Okay, these are some of the important trees. And in this forest, okay, both softwood and hardwood trees, दोनों प्रकार के जो है ओके पेड़ पाए जाते हैं. जहां तक हमने डेसिडियस फॉरेस्ट की बात की थी, तो डेसिडियस फॉरेस्ट में हम देखते हैं कि हार्डवुड ट्रीज पाए जाते हैं. Okay, we find only the hardwood trees. Why we do not find the softwood trees? We do not find the softwood trees because of the climate and because of the okay uh, because of the water. Okay, presence of water. ठीक है ना? Rainfall, the type of vegetation, it mainly depends upon temperature and moisture. We know this from the very beginning. So in this forest, what we see is both softwood. Okay, softwood is used for preparing what? Softwood का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? Why do we use the softwood? हाँ? Tell me. Made table के लिए. No. मैम Both softwood and hardwood. Manufacturing paper. Yes. मैम बास्केट बनाने के लिए. For the manufacture of paper. Okay. यस मैम, पेपर बनाने And के ma'am, लिए. newsprint. Newsprint पेपर बनेगा तभी ना बनेगा. Newspaper. Okay. So what we see is the softwood trees are used for manufacturing paper. Okay, ये जो wood होते हैं softwood trees के, इनको pulp में convert किया जाता है, and then that pulp is यस मैम, converted. बैम्बू ट्री. Okay, then that pulp is converted into paper. Bamboo is a softwood tree. Ah, who is saying this? No, ma'am. No, Have a ma'am. look. No, ma'am. See, these forests are also seen in the higher altitudes. These are the trees which Salima found in the Himalayas in abundance. Okay. They are tall, softwood, evergreen trees. The woods of these trees are very useful for making pulp, which is used for manufacturing paper and newsprint. Okay. Matchboxes and packing boxes are also made from softwood. Chur, pine, cedar are the important variety of trees in this forest. And the type of animals that we find in this forest are silver fox, mink, polar bear. Okay, these are some of the animals that are found in this forest. Now let us move towards the grasslands. Okay, now we will try to study the grasslands, the second category of vegetation, that is the grasslands. Okay. So how many types of forest we have studied? Are any forest being left out? Children? इनके अलावा भी और कोई टाइप के जो है जंगल पाए जाते हैं? हाँ? डेसिडियस फॉरेस्ट. डेसिडियस फॉरेस्ट तो हमने कर लिया. इसके अलावा भी और कोई फॉरेस्ट पाए जाते हैं? हाँ? Ma'am, Amazon forest. मैम मैनग्रोव. Ma'am, Amazon forest. अमेजन फॉरेस्ट तो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वो तो हम लोग शुरू में ही कर चुके हैं. ओके, सी टाइडल फॉरेस्ट. ओके, दिस टाइडल फॉरेस्ट, ओके, और मैनग्रोव फॉरेस्ट, इन्हीं को जो है मैनग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है. टाइडल फॉरेस्ट और मैनग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड. हु इज वॉकिंग? हाँ, कोई जो है अपने जो है मोबाइल लेके जो है वो टहल रहा है, इसकी वजह से ये डिस्टरबेंस हो रही है. हाँ हाँ, इन स्वैम्पी एरियाज. ठीक है ना? सी, ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट होते हैं या टाइडल फॉरेस्ट होते हैं, ये जो है स्वैम्पी एरियाज में पाए जाते हैं, विच आर कॉन्स्टेंटली वॉश्ड बाय सी वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड.
The people have become highly problematic. मैम आर्यन गुप्ता है. See, in swampy areas that are constantly being washed. These are constantly being washed by what? They are being constantly washed by sea water. समुद्र का जो पानी है वो okay during high tide. That is why they are known as the tidal forest. Okay, high tide. Now see, as far as these forests are concerned, okay, such vegetation is found almost all along the eastern coast, especially in large deltas formed by rivers like the Ganga, Mahanadi, Godavari, okay, Krishna and Kaveri. So see, these forests are found. This is not there in your book. If you wish to write, you can write. Are found in the delta areas, of rivers like Ganga, Mahanadi, Krishna, Godavari. Okay, so what we see, these forests are found in the delta areas, okay, of rivers like Ganga, Mahanadi, Krishna, okay, and Godavari and Kaveri, okay, and Kaveri. ठीक है ना? Now see, okay, the most extensive tidal forest is where? Where do we find the most extensive tidal forest? हमारे देश में ये जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है ये सबसे ज्यादा जो है इनकी कहाँ पाए जाते हैं? Tell me, Jay. Where do we find the mangrove forest? Ma'am, at the Sundarban Delta. Where it is? The Sundarban Delta is formed by which two rivers? कौन सी दो? Ma'am, Brahmaputra Ganga and Brahmaputra. Ganga and Brahmaputra. Gangetic Delta and in coastal plains in West Bengal. Okay, fine. The most extensive tidal forest is in the Ganga Brahmaputra Delta. It is called the Sundarbans. ठीक है ना? तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है ना? गंगा जो है वो स्त्रीलिंग है एंड ब्रह्मपुत्र इज पुल्लिंग, ठीक है ना? क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र। तो यहाँ पे देखिए ये दो नदियों के द्वारा जो डेल्टा तैयार की जाती है वहां पे जो है ये मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं एंड द सुंदरबन डेल्टा, ओके, द सुंदरबन डेल्टा इज मोबाइल ये मोटा है. Done. So what we see is mangrove forests are found in, we will write mangrove forests are found in Sundarbans, and apart from Sundarbans, Sundarban के अलावा Ma'am, Andaman and Nicobar Island. yes, and Andaman and Nicobar Islands, ठीक है ना? Island. मैम देखिए जो तुम मेरा हमदर्द है वीडियो. अंडमान और निकोबार जो महाद्वीप है वहां पे जो है ये पाए जाते हैं, ठीक है ना? अंडमान जो तू मेरा हमदर्द है अभी भी इसमें है लिंक में. लालजी सर, ये देखिए ये किसको कैसे ट्रेस करेंगे, देख रहे हैं क्या नाम लिख के भेज रहा है, जो तू मेरा हमदर्द है. हाउ टू ट्रेस दिस इडियट? यस मैम, ज्वाइन हो गया फिर से. मैम लेफ्ट कर दिया क्लास. लेफ्ट कर दिया. मैम क्लास छोड़ के भाग गया.
मैम मैं हर रोज जब भी क्लास करते थे ऐसे ही लिखते हैं।